सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले हम। सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले हम। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं। कोई आगे चलता है, हम पीछे चलते हैं। दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है। इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रोके से न रुके हम, मर्जी से चले हम। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। है मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी
तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है। श्रीमान, स्वतंत्रता दिवस के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। 2, 3, गोश साधन, गोश स्लो मार्च भाई शुरू कर। ఇప్పుడు పూజా కార్యక్రమంతో
I invite Vivian group for Vande Mataram. వందే మాతరం గీతం పాడే సమయంలో దయచేసి పేరెంట్స్ అందరూ నిలబడవలసిందిగా కోరుచున్నాను. ఒక్క నిమిషం నిలబడవలసిందిగా కోరుచున్నాను. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा
तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। Now the sports in charge are coming forward to give a great salute. Thank you sir, thank you ma'am. March in each discipline
దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్ని రంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటున్నారు. త్రివర్ణ పతాక నిబనిపనులు ఆకాశపు హద్దుల వరకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఎర్రకోటపై త్రివర్ణ పతాకం ఎగిరినట్టుగానే ఆదర్శ విద్యాలయ పాఠశాలలో ఈరోజు త్రివర్ణ పతాకం ఎగురుతుంది. ఈరోజు మనమందరం కళా మందిరంలో కూర్చున్నాం. అద్భుతమైన Learning activity is more important for us. కావాల్సిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. బండేరావు ఎస్కర్ట్ తీసుకొని పైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. It is all about freedom fighters and related to Deshbhakti. Are you ready? Are you ready? Here is the first question. Those who know, please raise up your hand. No need to say answer. Raise up your hand or come forward. Only one should give answer. Priyanka, wrong answer. Very good, correct answer. Give it a try. Inqilab Zindabad. Correct answer. Wow. Yeah. APJ Abdul Kalam. Wrong answer. Wrong answer. Still anyone? Iron Man of India. That Correct answer. Sardar Vallabhbhai Patel. very good. World War II. Subhash Chandra Bose. Correct answer. Very good. Bankim Chandra Chatterjee. Correct answer. Dr. Ambedkar. No. P.V. Narasimha Rao. No. Come here. I said. Expected to please but teachers, dear friends, and my lovely classmates. Happy Independence Day to all. Today we are celebrating our country's 78th Independence Day. This day This day is very special because on 15th August, India became free from the British. Our freedom fighters like Mahatma
बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो मान शान या किसान का हो दान आज धनुष के बाण पे उतार दो
education is a foundation for a better future tomorrow. So this is the place we never tried anything new. Education is the art of making a man ethical. With this, now I would like to invite our bright students, Sabura from 9th standard, to express her views how Good morning everyone, honorable dignitaries on the dais, respected principal, teachers, parents and all my dear friends. I am Safura Mahin from 9th standard. I am very happy to have the opportunity to express my thoughts on the auspicious occasion of Independence Day. Welcome to the Independence Day celebration at our school and wishing you all a very happy Independence Day. The theme of Independence Day of 2024 is Vikas Bharat. It means India will be a complete developed country by 2047. On August 15, 1947, India finally achieved the long-awaited dream of self-government, making the beginning of a new era for the country. Today it's our 78th Independence Day and we should feel proud to be a part of an independent nation that has freedom of speech, freedom to live life in our own way. We do not see at one time India's culture, heritage and its diversity in the form of language, food and dress were considered as a weakness. But in the quest of independence, we proved to the world that diversity is our strength. During the independent movement, be it Gujarat or Bengal, the region of South or the north part of the country, unitedly exhibited the belief, Ek Bharat, Shresth Bharat. It raised the consciousness of the society and unity in diversity became a mantra for freedom fighters. People from diverse backgrounds, language and region came together under the leadership of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose and many others. It was unity that enabled India. This day we teach us the value of freedom and importance of working together. It is a day to remember our past, honor our heroes and pray, blessed to make our country strong and prosperous. This day we pay tribute to those freedom fighters who laid down their lives in sake of motherland. They are the ones who gave us the country we live in. They gave us the free air we breathe in. They gave us the scented soil we are proud of. They gave us the dignity we deserve as a citizen of Indian subcontinent. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. But with certain duties. Now I invite Sai Prashanti and group for song. Thank you.
डोल लुटी, कितने घर बर्बाद हुए। हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान लुटा दी और बदले में दे दी हमको ये पावन आज़ादी। इसी के साथ मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त करते हुए बेहद खुशी की अनुभूति हो रही है। इस 15 अगस्त 2024 को हम सभी अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस भारतीयों के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन होता है तथा ये इतिहास में सदा के लिए उत्लिखित हो चुका है। यह वो दिन है जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा वर्षों के संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी मिली। भारत के आज़ादी के पहले दिन को याद करते हुए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी आहुति दी, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि। आज़ादी की ज्वाला अंत तक जलती रही, आज़ादी की ज्वाला अंत तक जलती रही। भारत माता अपने वीर पुत्रों के लहू में रंगती रही, भारत माता अपने वीर पुत्रों के लहू में रंगती रही। इसी के साथ मैं इस भाषण को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Minded, dynamic, hard-working, friendly relations with the teachers and the students, positive environment, very creative ma'am, B. Padmavati Rao ma'am, to express the views on this occasion. I request all the students. There is one oft. A guru says, it is not a greatness to catch the mistake. Everyone listen me carefully and try to understand what means to say. It is not a greatness to catch the mistake. It is a greatness to ignore perception and give another chance to save his honor. With this quote, good morning and happy Independence Day to all. Here we all gather to celebrate our 78th Independence Day. As we gather here to celebrate Independence Day without further delay, I'm sorry to say. So first of all, I privilege to extend my gratitude to our honorable respected Honorable Kalwa Chandrasekhar sir, President of Adarsh Vidyalaya, and our Vice President Mr. Shrinu sir, and Treasurer Mr. Praveen sir, and all esteemed management committee and distinguished guests, my dear teachers, and my beloved students and parents. So without delay of today's, I would like to express my gratitude to say a few words about my management. You know guys, such type of management I never seen in my whole journey. It's for my heart I'm speaking these things. Such type of management I never seen in my whole journey. Their keen observation each and every moment, their support, their dedication and their commitment toward the institution, it is really mind-blowing. So with this word, once again, to happy Independence Day to all. So in this auspicious occasion, I would like to say a few words about today's occasion. So we gather here to celebrate 78th anniversary of Independence Day. As we take this moment, we commemorate the countless sacrifices made by the freedom fighters who fought tirelessly for our nation's sovereignty. The significance of this day cannot be overstated.
It is a day to remember the struggle and challenges endured by our ancestors, that we can enjoy the freedom as we have today. It is a day to reflect on our progress as the nation and reframe our commitment building a better future and ourselves and future generations to come. As we celebrate this momentous occasion, let us also take a moment to acknowledge the challenges that we face as a nation. We are still grappling with issues such as poverty, inequality, and corruptions. It is up to us to work toward and overcome this obstacle in building a more prosperous and equitable society. On this Independence Day, let us renew our pledge to uphold the value of democracy, freedom, and justice. Let us strive toward creating a nation where every citizen has the equal opportunity and where diversity is celebrated. In conclusion, it urges all of you to take a pride in Shell. Let us come together as one nation and build a brighter future for our future generation and for India. So all the students say with me, Jai Hind! Jai Hind! To all the dignitaries who has given their valuable time today, and the parents and all my dedicated teachers, my supportive staffs and my children. Once again, Jai Bharat, Jai Hind. Thank you. భవనం 50 సంవత్సరాలు పూర్తి అయిన శుభ సందర్భంలో కళాభవనాన్ని కూడా కంచి కామకోటి పీఠాధిపతుల చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం. సజీవ సాక్ష్యంగా కళాభవనం మీ ముందు ఉన్నది. ఈ శుభ సందర్భంగా మనం కొంతమంది ముఖ్యులను సన్మానం చేయాలనుకున్నాం. కాబట్టి సన్మానించడానికి మన అధ్యక్షులైనటువంటి శ్రీ చంద్రశేఖర్ సార్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. వారి యొక్క సేవలను, వారి యొక్క సలహాలను గౌరవిస్తూ ఈరోజు మేము చిన్న సన్మానం చేసుకుంటున్నాం. అలాగే శివాజీ జాదవ్ గారు కూడా సన్మానాన్ని గ్రహించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. శివాజీ జాదవ్ గారు సన్మానాన్ని గ్రహిస్తున్నారు. మన అధ్యక్షుల వారు, సౌమ్యులు, పాఠశాలకు విశేష సేవలు అందించినటువంటి అధ్యక్షుల వారు, అలాగే ఎస్ నరసింహారెడ్డి గారిని కూడా సన్మానం గ్రహించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఈ యొక్క సన్మానంలో మన ఎస్ నరసింహారెడ్డి గారు 50 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న శుభ తరుణంలో ఈ యొక్క సన్మానాన్ని మనం చేస్తూ ఉన్నాము. తర్వాత ఆర్ నరసింహులు గారిని సన్మానాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. యాభై వసంతాలు పూర్తి చేసుకుని కళాభవనం సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. దీనిని కంచి కామకోటి పీఠాధిపతులు ప్రారంభోత్సవం చేశారు. గట్టి చప్పట్లతో సన్మానం, సత్కారంతో పాటు కరతాళ ధ్వనులు మారుమ్రోగాలి. ఇవే మంగళ వాయిద్యాలుగా భావిస్తాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. And the prize presentation to Akshita from UKG A. She is a great winner from drawing competition. Second prize Aditya from first A.
Harpita from first B. Competition. Sanvi, second A. Sanvi, second A. Sanvi from second A. Huzaifa from second B. Huzaif from second B. Huzaif from second B. Aishwarya from third A. Aishwarya from third A. Thank you very much, ma'am and sir, for distributing the certificates to our students. Award and collect the certificates. Why Akila Bhavani from 6th A? Why Akila Bhavani from 6th A? Vice President sir and Sadanand sir to award these prizes for our winners in quiz competition. Next, Akshay Begum from Elder Group. Akshay Begum. Susana from Red Group. Suraj from Red Group. Divya from Green Group. Harshada, Yellow Group. Harshada from Yellow Group. Pratika from Green Group. Pratika from Green Group. Priyanka from Green Group. Priyanka from Green Group. Managing Committee, General Body Members, the Grain and Seed Sponsors Association, विद्यार्थियों के जो माता पिता, विद्यार्थी, टीचर, स्टाफ, सभी लोगों को मैं आज कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आज मुझे देख के बहुत खुशी हुआ। विपरीत वातावरण की परिस्थिति में बरसात हो रहा था। ये जो कला मंदिर के जो कंपटीशन में शायद 15 अगस्त तक पूरा होने का उम्मीद बहुत कम था, लेकिन प्रकृति ने अपने को सहयोग किया और कला मंदिर सफलतापूर्वक जो आविष्कार हो गया। बहुत बड़ा काम हुआ। एक 3 साल के अंदर इतना काम हुआ, बहुत वर्णन करना असंभव है। पुराना बिल्डिंग के ऊपर जो वर्णन था, इनकम्प्लीट था। हम चला बच्चे पढ़े, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसको जो रूप देना था इस समय में उसका जो रूप मिल गया। और कला मंदिर हमने एक दृश्य देखा था एक फंक्शन हॉल में, उसका जो प्रयत्न सफलीकृत हुआ और उसके ऊपर जो सुवर्ण अक्षर से दी ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन सर्विस यूनिट आदर्श विद्यालय हमारा जी एसोसिएशन का एक सेवा संस्था है।
इस बात को हम सुवर्ण अक्षरों से ये कला मंदिर के जो आज पे हम बनाया गया, ये बहुत प्रशंसनीय है, ताकि आने वाले पीढ़ी समझो या आने वाले पेरेंट्स समझो, आने वाले जो जनता समझो, ये समझे कि ये कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये सेवा संस्था है और इसको निरंतर सेवा करते हुए साल को लाखों रुपए वहां से कलेक्ट करके यहाँ पे जो खर्च कर रहे हैं, उसका जो मुख्य रूप ही है आज ये सुंदर भवन का जो दिख रहा है। मुझे याद है 1976 में रेलवे स्टेशन में कोई घर नहीं था, आबादी नहीं था, जो हम स्कूल की कल्पना किए, हमको जो उस टाइम की जो मिनिस्टर ऑफ दी पंचायत वाले मिनिस्टर थे एम बादल अली साहब, उन्होंने हम स्कूल के लिए जगह जो दी है, उस टाइम के चीफ मिनिस्टर जगह नंदलाल साहब को हमने इन्वाइट किया और उनसे जो पूजा करा रहे, हमारे पास एक पैसा नहीं है। हमारे मर्चेंट्स कम्युनिटी के अंदर हमने प्रस्ताव रखा तो पूरा सहयोग मिला। 50 साल से हमारे मर्चेंट्स के सहयोग से इस हाइयर लेवल में, हाइयर कोर्स में, हाइयर एजुकेशन में और अच्छा शिक्षा लिया गया। इसमें योगदान मुख्य भूमिका से हमारे टीचर्स का है। हमारे टीचर्स को कितना भी प्रशंसा करे कमी है। ये सेल्फ गवर्निंग स्कूल वाले हमारा बच्चों को हम बढ़ा रहे हैं। उनका जो खर्चा है, टीचरों को वेतन है, पूरा हमारे जो पेरेंट्स जो खर्च कर रहे हैं वो टीचर बच्चों के पढ़ाई में, टीचरों के वेतन में खर्च कर रहे हैं। और हमारा जो कंट्रीब्यूशन जो गन से आता है, वो कंट्रीब्यूशन से यहाँ डेवलपमेंट चलता है। केवल क्लासरूम ही नहीं, अब प्ले ग्राउंड बनाना है, जबरदस्त प्ले ग्राउंड। विद्यार्थी केवल पढ़ाई में नहीं, खेल कूद, व्यायाम, एक्सरसाइज, ऑल राउंड चैंपियन बनने के लिए जो व्यवस्था के लिए यहाँ पे जो अपने को भगवान ने जो इतना प्रांगण दिया, उस प्रांगण को सुंदर बनाने का जो प्रयत्न ये निरंतर चलते रहे। हमारे लोग कई मंदिरों में कई सेवा कार्य करने का काम करते हैं, लेकिन हमको एक ऐसा मौका मिला एक विद्यालय क्षेत्र में इन बच्चों को अच्छे भविष्य देने के लिए जो प्रयत्न के अंदर हमको जो भागीदारी मिला, ये हमारा सौभाग्य है। इसको सदुपयोग करने से हमारे मन को शांति मिलता है और एक कार्य के अंदर हम जो भागीदारी है उससे जो संतुष्टि मिलती है। और हमारे मेंबर्स का जो सेवा है बहुत प्रशंसनीय है। अपने इंटरनेशनल स्कूल्स रहेंगे और बड़े बड़े स्कूल्स बनेंगे, लाखों रुपए फीस लेंगे, लेकिन हम कम खर्चे के अंदर जो उस क्लास के फैसिलिटी दे रहे। इधर बरंडे में गए तो हमारे वॉशिंग, हाथ धोने के वास्ते जो अरेंजमेंट है, लेबोरेटरी बने हैं, अभी शायद लेबोरेटरी का एक आगे ही बना है, तो कोई सुविधा की कमी नहीं है यहाँ पे। ये सब हमारे बच्चों के वास्ते जो हमने कर रहे हैं, इसका फायदा उनके माता पिता जो पेरेंट्स हैं हमारे, तो उनको मिलता है। उनका सहयोग बहुत आवश्यकता है। उनके सब सहयोग से उनके बच्चों को अच्छा पढ़ा देने में हमारे मैडम जो आए पद्मावती राव जी, उन्होंने इतना डायनेमिक और एक्टिव जो काम कर रहे हैं, उससे हमको बहुत खुशी है। पेरेंट्स खुश है, बच्चे खुश है। हमको क्या चाहिए? सबकी खुशी, सबकी प्रगति, विद्यालय का उन्नति, यही हमारा लक्ष्य है। इतना कहते हुए मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद। Chandrika Srinathya, Mahalakshmi from 4th B, Srinath from 5th A, Omkar Rathod from 5th B, Akila Pawani 6th A, Mohammad Rafiq 6th B, Tulsi from 7th A, Dheeraj Shani 7th B, Tawfiq 8th A,
Mercy from 8th B, Vikas from Aswarin Hasra from 10th B. These are the Mohammad Adnan from UKG A, Sai Ram from UKG B. Mohammad Adnan from UKG A. Now get ready for first prize in drawing. The students who are standing on the dais, they are the first position in drawing competition which we have conducted from classes UKG to 10th class. Wiseman Singh కూడా రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. మిగతా ప్రైజెస్ వైజ్మన్ సింగ్ కూడా ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచున్నాం. స్టూడెంట్ छोटी ఇక్కడ చూడాలా ఓకే సార్ మార్చ్ ఫాస్ట్ లో సెకండ్ ప్రైజ్ అందుకున్న బ్లూ హౌస్ కు సక్సెస్ పొందిన బ్లూ వెల్స్ అండ్ ఓర్చిస్ హౌస్ వీరికి బహుమతి ప్రదానం చేయవలసిందిగా మన పాఠశాల కమిటీ అధ్యక్షులు శ్రీ ఇప్పుడు అలాగే మరోసారి గ్రీన్ హౌస్ పైకి రావాలి. మాస్టర్స్ టీచర్స్ కూడా నిలబడి ఒక ఫోటో తీసుకోవాలి. బ్లూ హౌస్ టీచర్స్ అండ్ గ్రీన్ హౌస్ టీచర్స్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. స్పోర్ట్స్ ఇన్ఛార్జెస్ ఆల్సో. I request all the parents be in standing position for the school anthem. Parents, please stand up for the school anthem.
चाहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पा दिल लाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे प्यार का तराना मैं, चंदा नहीं सूरज नहीं दुनिया की दौलत नहीं, बस लूटूंगा तेरे प्यार का खजाना। एक नजर चाहते होती है प्यार, दुनिया तब तो मेरे चमके दमके महके रे, तेरा चेहरा सूरज जैसा, चांद सी ठंड है प्यार में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा ले, मुझको फिर वो प्यार दे। Rubber cup, delivery tube, zinc granule, hydrochloric acid candle. Here I am pouring some zinc granules in the test tube. And some diluted HCl, hydrochloric acid. Soap water and some fogs like bubbles are getting out. जय हो, जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो, आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी वाले नीले आसमान
used in bike side mirrors. This is convex. This is bulged out. Bulged out. This is bulged in. Through this visibility. These convex mirrors are used in bikes range view mirrors. This is used dentist doctors. During the wars, it will used to burn ships by focusing the sunlight, and it will focus on the ship. And when we keep in sunlight, it will focus on ship. That ship will be burned. This is big one.